10वीं कक्षा के विद्यार्थियों, आप सबका मेरे हिंदी क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ रेखाचित्र नीलकंठ। नीलकंठ पाठ के पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोगों को महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ बातें बताई थी। फिर रेखाचित्र के बारे में भी कुछ जानकारियाँ दी थी और पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताई थी। फिर पाठ के पहले कुछ अवधियों को हमने आलोचना की थी। अब पार्ट 2 वीडियो में हम पाठ के शेष अवधियों को पढ़ेंगे। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक शब्द का अर्थ गलत बता दी थी। वो शब्द था मारजारी। मारजारी मतलब मादा बिल्ली। मादा बिल्ली माने हल माइकी मेकुरी। मोर मुखर परा मादा बिल्ली माने मता मेकुरी बुली उलाई गल। अवश्य मता मेकुरी নহয়, मादा बिल्ली माने हल माइकी मेकुरी। गतिके निश्चय कथाটো তোমালোকে গম পালা। এতিয়া আমি পাঠৰ মাজলৈ যাওঁ। तो विद्यार्थियों, तुम सब लोग अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाल लो। अब हम अवधि 4 से आलोचना करने वाले हैं। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी छिरी मारने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अचता पचता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 छिरीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। याद की कैसे मैं परीक्षा निरीक्षा কৰি থকাৰ সময়তে মানে महादेवी बर्माई সেই চৰাই পোৱালিকেইটাৰ যিটো জালৰ ফ্ৰেম আছিল, সেই ফ্ৰেমটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চাই থাকোঁতেই বৰে মিয়াই মানে দোকানীজনে তেওঁৰ ভাষণ দি আছিল, মানে কথা কৈ আছিল। যিহেতু তেওঁ বহুত বেছি কথা কয়, তেওঁ ক'লে মানে দোকানীজনে ক'লে, ईमान कसम, गुरुजी छिरी मारने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। जे भगवाনৰ শপত যে গুৰুজী, এই চৰাই চিকাৰীজনে মোৰ পৰা মৰা চৰাই হালৰ বাবে নগদ 30 টকা লৈছে। বাৰহা कहा যে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। जे तই ভাবচোন, যে ককাই তই ভাবচোন, এতিয়ানো এই মৰা চৰাইহালৰ কি গুণ আছে, তই যে মোৰ পৰা ইমান দাম লৈছ। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। কিন্তু সেই কৃপণজনে, মুঞ্জি মানে হ'ল কৃপণ, চিপচ হয় নাই, মই অলপ আগত কি কয় পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ। তেতিয়া বৰেমিয়াই ক'লে, মানে দোকানীজনে ক'লে যে সেই কৃপণজনে ক'ত মোৰ কথা শুনিব। आपका ख्याल करके अचता पचता कर देना ही पड़ा।
যে মই আপোনাৰ কথা ভাবিয়েই পস্তাই হ'লেও 30 টকা তাক দিলোঁ বা দিব লগা মোৰ হ'ল। अब आप जो मुनासिब समझे, এতিয়া আপুনি আৰু যি ভাবে যে মইতো তাক 30 টকা দিয়ে লৈছোঁ, এতিয়া আপুনি আৰু যিটো উচিত বুলি ভাবে মোক দিব, সেই বুলি দোকানীজনে ক'লে, মানে বড়ে মিয়াই ক'লে। अस्तु 30 छिरीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र ही जीवित हो गया। अस्तु माने ठीक आसे, 30 टका চৰাই চিকাৰীজনৰ নামত আৰু 5 টকা বড়ে মিয়া মানে দোকানীজনৰ বিশ্বাসৰ কাৰণেই মই দিব লগা হ'ল। মানে মহাদেৱী বৰ্মাই কি কৰিলে, 30 টকা চিকাৰীজনৰ দাম আৰু 5 টকা বড়ে মিয়াৰ বিশ্বাসৰ কাৰণে মুঠতে 35 টকা দি সেই সৰু জালৰ ফ্ৰেমটো, মানে চৰাই পোৱালিহাল থকা জালৰ ফ্ৰেমটো লৈ আনি গাড়ীত ৰাখিলতেই সেই জালৰ কি হ'ল, জালৰ পিঞ্জৰাটো কি হ'ল, একেবাৰে জীৱিত যেন হৈ পৰিলে। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। দুয়োটা চৰাই পোৱালীয়ে এনেদৰে ছটপটাবলৈ ধৰিলে যেন সজাটোৱে, জালৰ সজাটোৱে সজীৱ হৈ গ'ল আৰু জালৰ সজাটোৱে যেন উৰি যাব, এনেকুৱা কৰিবলৈ ধৰিলে। মানে চৰাই পোৱালীহালে যেন সজাই উৰি যাব, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সেই সময়ত দেখা গ'ল। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे छिर जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखब के पर लगे हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। जे याद की कैसे, घर पहुँचने पर सब कहने लगे तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। माने महादेवी वर्मा जेतिया এইটো চৰাইহালৰ মৰা চৰাইহালৰ সজাটো লৈ ঘৰ পালেগৈ, তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে দেখি ক'লে যে তোমাক কিন্তু দোকানীয়ে ঠগিলে দেই, এইকেইটা মৰা চৰাইৰ পোৱালি নহয়, এইকেইটা বতা চৰাইৰহে পোৱালি। তিতৰ মানে বতা চৰাই। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे छिर जाने की दुर्बलता बन गई है। যে মহাদেৱী বৰ্মাই এনেকৈ কেইবাবাৰো ঠগ খাইছে আৰু ঠগ খোৱাৰ কথা সেইকাৰণে কোনোবাই ক'লেই তেখেতৰ খং উঠি যায়, মানে তেখেত অসন্তুষ্ট হৈ যায়, আৰু অসন্তুষ্ট হৈ যোৱাটো মানে তেখেতৰ দুৰ্বলতা নিচিনা হৈ পৰিছে। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मेरे मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं। অসন্তুষ্ট হৈয়ে মহাদেৱী বৰ্মাই ক'লে। এইখিনিতে এটা আমি মুহাৱৰা পাইছোঁ, সেইটো হ'ল সুৰখাব কে পৰ লগনা। সুৰখাব মানে হ'ল এটা বৰ ধুনীয়া হাঁহজাতীয় চৰাই। এই সুৰখাব কে পৰ লগনা, সেইটো মুহাৱৰাটোৰ অৰ্থ হ'ল অনৌখাপন, মানে খুব ভাল, একেবাৰে শ্ৰেষ্ঠতা সূচক দেই। মহাদেৱী বৰ্মাই কৈছে যে মোৰ কে কিয়া সুৰখাব কে পৰ লগে হে, যে মৰা চৰাই কি সুৰখাবৰ পৰ লগা আছে নেকি, মানে মৰা চৰাই খুব ভাল নেকি, একেবাৰে শ্ৰেষ্ঠ নেকি, আৰু তাতকৈ কি ভাল চৰাই নাই নেকি, তিতৰ হ'ল বুলিয়ে কি চৰাই নহয় নেকি। মানে মহাদেৱী বৰ্মাৰ অকণমান খং উঠিছে, যিহেতু মৰা চৰাই পোৱালিকেইটাক ঘৰৰ মানুহে তিতৰ বুলি কৈছে, দোকানীয়ে তেওঁক ঠগিলে বুলি কৈছে, সেইকাৰণে খঙতে মৰা চৰাই কথা বেয়াকৈ কোৱাৰ বাবে মহাদেৱী বৰ্মাই ঘৰৰ মানুহক এনেদৰে কৈছে যে কি মৰা চৰাই শ্ৰেষ্ঠতা
একেবাৰে শ্ৰেষ্ঠ নেকি? যি হ'লেওতো চৰাইটো হয় ন, এনেকৈ বুলি কৈছে। হে তো পক্ষী হি, যে চৰাইটো হয়। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशिष्ट आ गई। যে ঘৰৰ মানুহে তেওঁক অসন্তুষ্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণেই, মানে ঠগ খোৱা বুলি কোৱা কাৰণেই খঙতে হয়তো সেই মৌৰা চৰাইহালৰ প্ৰতি মহাদেৱী বৰ্মাৰ ব্যৱহাৰ তথা যত্ন, মানে সিহঁতক লালন পালন কৰাৰ যিটো হেঁপাহ তেওঁৰ বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে, মানে অলপ বিশেষ হৈ পৰিলে সিহঁত পোৱালিকেইটা মহাদেৱী বৰ্মাৰ বাবে। বুজি পাইছেনে বাৰু কথাখিনি? ভালদৰে মন দি শুনিবা দেই। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कतरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न है। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एड़े गेड़े मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जे की कैसे पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कतरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। মহাদেৱী বৰ্মাই কি কৰিলে, প্ৰথমতে তেখেতৰ যিটো লিখা পঢ়া কৰা কোঠা আছিল সেই কোঠাটোলৈ সেই মৌৰা চৰাইহালৰ সজাটো লৈ গ'ল আৰু তাতে ৰাখি সজাটোৰ দুৱাৰখন খুলি এটা সৰু বাটিত মঠি থোৱা আটাৰ কিছুমান সৰু সৰু গুটি বনাই, মানে গোল গোলকৈ আটা সৰু সৰুকৈ বনাই দি সিহঁতক খাবলৈ দিলে আৰু অলপ পানীও খাবলৈ দিলে। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। আৰু সিহঁত দুয়োটা যেতিয়া সজাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ পালে, সিহঁত একেবাৰে কেনেকুৱা হৈ গ'ল বুলি কৈছে, যেন মানো খো গে, যেন একেবাৰে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিলে। कभी मेज के नीचे घुस गए, কেতিয়াবা টেবুলৰ তলত সোমালেগৈ, कभी आलमारी के पीछे, কেতিয়াবা আকৌ আলমাৰীটোৰ পিছত সোমালেগৈ, आलमारी पिछफाले हुमालेगो। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। और शेषत एनेকৈ लुका भाकु खेली खेली जेতিয়া সিহঁতৰ ভাগৰ লাগিলে তেতিয়া কি হ'ল, रद्दी कागज़ों की टोकरी, মানে रद्दी মানে হ'ল যিবোৰ কামত নহা কাগজ পত্ৰ, মানে মহাদেৱী বৰ্মাই নিজৰ অলাগতিয়াল কাগজ পত্ৰবোৰ এটা ডাষ্টবিনৰ টাইপৰ খৰাহিত ৰাখি গৈছিল আৰু সেই মৌৰা চৰাইহালে কি কৰিলে, তাতেই নিজৰ এটা অস্থায়ী বাসগৃহ বনাই ল'লেগৈ, মানে নয়ে বছেৰে কা গৌৰৱ প্ৰদান কিয়া। সেই খৰাহিটোকে বা সেই ডাষ্টবিনৰ দৰে খৰাহিটোকে
সিহঁতৰ আশ্ৰয় শিবিৰ বা আশ্ৰয়স্থল মানে ঘৰ হিচাপে সিহঁতে বনাই ল'লে। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। 2-4 दिन এনেকৈয়ে সেই মৰা চৰাইহালে কি কৰিলে, লুকাই লুকাই গুপ্তবাস কৰতে বুলি কৈছে নহয়, লুকাই লুকাই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে আৰু ৰাতি আহি পুনৰ সেই বেয়া কাগজৰ খৰাহিটোতে থাকেহি। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। আৰু যেতিয়া সিহঁতে অলপ সেই পৰিস্থিতিটোৰ লগত নিজকে খাপ খাব পাৰিলে বা নিজকে সিহঁতৰ অলপ কনফিডেণ্টটো বাঢ়ি গ'ল, যেতিয়া সিহঁত কনফিডেণ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ল, সিহঁতে কেতিয়াবা টেবুলৰ ওপৰতো উঠে, কেতিয়াবা চকীখনৰ ওপৰতো উঠে আৰু কেতিয়াবা কি কৰে, মহাদেৱী বৰ্মাৰ মূৰৰ ওপৰতো উঠি যায়। খিৰিকীও মে তো জালি লাগি থি, মহাদেৱী বৰ্মাৰ লিখা পঢ়া কৰা কোঠাটোত যিবোৰ খিৰিকী আছিল তাত জালনা লগাই থোৱা আছিল। पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था, किंतु दरजाখন महादेवी बर्माए बंधए কৰি থ'বলগীয়া হৈছিল। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इस नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, कारण যদি দৰজাখন মহাদেৱী বৰ্মাই খুলি থয় তেতিয়া মহাদেৱী বৰ্মাৰ মেকুৰীজনীৰ নাম আছিল চিত্ৰা, মেকুৰীজনীয়ে এই মৰা চৰাইহালৰ কথা গম পাই গ'লহেঁতেন। तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। আৰু তেতিয়া এই মৰা চৰাইহালক যদি চিত্ৰাই বিচাৰি পায় তেতিয়া সেই চৰাইহালক চিত্ৰাই কি কৰিব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, অৱশ্যে সেই চিত্ৰাই মানে মেকুৰীজনী মানে ইমান বেয়াও নাছিল, নিগনিকো আক্ৰমণ সহজে নকৰে। किंतु परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था, किंतु ইয়াত আকৌ 2টা অপৰিচিত চৰাইৰ অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ কথা আহি পৰিছে। যিহেতু চিত্ৰাই তাইৰ মালিকনী মহাদেৱী বৰ্মাক খুব ভাল পাইছিল আৰু মহাদেৱী বৰ্মাৰ ওপৰত কোনোবাই যদি অধিকাৰ দেখুৱায় তাই তেতিয়া একদম জ্বলন হৈ যায় মানে তাই, সেইবাবে সেইটো সময়ত তাই কি কৰি পাব ঠিক নাই। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। যে সেইকাৰণে দৰজাখন বন্ধ থকাই ভাল, কাৰণ মাৰ্জাৰীৰ দৃষ্টিত কি হ'ব, মানে সেই মেকুৰীজনীৰ দৃষ্টিত এই মৰা চৰাইহাল যিহেতু এৰেগেৰে হ'ব, মানে যেহে আহি মহাদেৱী বৰ্মাৰ যিখন লিখা পঢ়া কৰা টেবুলৰ চকী আছিল, মানে যিখন সিংহাসন আছিল, তাত চিত্ৰাৰ বাহিৰে যদি বেলেগ কোনোবাই আহি বহে তেতিয়া চিত্ৰাৰ দৰে অভিমানিনী মেকুৰীজনী একেবাৰে অসহ্য হৈ পৰিব। সেই কথাষাৰ মহাদেৱী বৰ্মাই ক'লে। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे सामान्य निवास हैं। যে ইয়াত কি কৈছে, যেতিয়া মোৰ কোঠাটো সেই চৰাইহালে কি কৰিলে, একেবাৰে চিৰিয়াখানাৰ দৰে কৰিবলৈ ল'লে, মানে একদম কোঠাটোৰ পৰিৱেশটো সেই মৰা চৰাইহালে একদম মানে চিৰিয়াখানাৰ দৰে কৰি পেলালে, চাৰিওফালে গোটেই চেদেলি ভেদেলি কৰি পেলালে। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे सामान्य निवास है। তেতিয়া মহাদেৱী বৰ্মাই কি কৰিলে, বৰ কঠিনতাৰে চৰাইহালক ধৰি এটা জালৰ ডাঙৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল, যিটো মহাদেৱী বৰ্মাৰ এটা সামান্য ঘৰ আছিল।
অন্য এটা সামান্য ঘৰ আছিল য'ত আলহী চালহী আহিলে থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেই সেই তাৰে এটা জালিৰ কোঠালৈ সেই মৌৰা চৰাইহালক লৈ গ'ল दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुतरुंगू गुतरुंगू की रागिनी अलापने लगे बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया जे की कैसे दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है যে দুয়োটা মৰা চৰাই যেতিয়া সেই জালৰ ঘৰটোলৈ লৈ যোৱা হৈছিল তেতিয়া আগৰে পৰা তাত থকা জীৱ জন্তুবিলাকে এনেকুৱা কৌতূহল দেখুৱাইছিল যেনে এগৰাকী কইনা নতুনকৈ ঘৰলৈ আহিলে সেই পৰিয়ালটোত যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তাত সৃষ্টি হৈছিল যেনেদৰে মানুহে কইনা চাবলৈ আহে ঠিক সেইদৰে সেই মৰা চৰাইহালকো অন্যান্য জীৱ জন্তুবিলাকে চাইছিল लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े लक्का कबूतर माने पार चराई कबूतर पार चराई पिछफाলৰ পাখিকেইডাল মেলি পেলাই কি কৰে গুতৰাংগু কৰি জপিয়াই থাকে হয়নে নাচি থাকে কৈছে যে সেই পাৰ চৰাইটোৱে কি কৰিলে দৌৰিবলৈ এৰি সেই মৰা চৰাইহালৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি গুতৰাংগু কৰি মাত মাতিবলৈ ধৰিলে बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे আৰু ডাঙৰ যিটো শহাপহু ডাঙৰ শহাপহুটোৱে কি কৰিলে এজন সভ্য সভাসদৰ নিচিনাকৈ বহি গভীৰভাৱে একদম গম্ভীৰভাৱেৰে সেই মৰা চৰাইহালক নিৰীক্ষণ কৰি থাকিলে সি এনেকুৱা দেখুৱালে যেন সি আগৰে পৰা তাত থকা অকণমান বাহাদুৰি এটা সি দেখুৱালে মানে সেই গম্ভীৰ ভাৱটোৰে এই মৰা চৰাইহালক उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे उनकी गेंद माने ऊলৰ সূতাবোৰ পকাই যেনেদৰে এটা বল কৰি থোৱা হয় ঠিক সেই বলটোৰ দৰে সৰু শহাপহুটোৱে কি কৰিলে মৰা চৰাইহালৰ চাৰিওফালে খুব জপিয়াবলৈ ধৰিলে तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे আকৌ ভাটৌ চৰাইটোৱে কি কৰিলে ভাটৌ চৰাইটোৱে এটা চকু বন্ধ কৰি মৰা চৰাইহালক পৰীক্ষা কৰিলে কিনো আহিলে এইকেইটা কি বস্তুনো এইকেইটা মানে কি চৰাইনো সি সেই কথাবোৰ সি চাবলৈ ধৰিলে ভাবিবলৈ ধৰিলে এটা চকু বন্ধ কৰি লৈ उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया যে সেইদিনা এনেকুৱা লাগিছিল যে মোৰ চিৰিয়াঘৰ চৰাই ঘৰলৈ যেন ভূমিকম্পহে আহিছে বা মোৰ চিৰিয়াখানাটোলৈ ভূমিকম্পহে আহিল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली की बनना যে লাহে লাহে দুয়োটা মৰা চৰাই ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে পোৱালিৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमश और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली की बनना সিহঁতৰ শাৰীৰিক গঠন কায়াকল্প মানে শাৰীৰিক গঠন এনেকুৱা হ'বলৈ ধৰিলে যে ক্ৰমশ ৰঙীন হৈ যাবলৈ ধৰিলে ধুনীয়া হৈ যাবলৈ ধৰিলে কেনেকুৱা ধুনীয়া মৰা চৰাইটো তোমালোকে মনত পেলোৱাচোন হয়নে নহয় বাৰু ঠিক তেনেদৰে ক্ৰমশ যিমানে সিহঁত ডাঙৰ হৈ আহিবলৈ ধৰিলে সিমানে সিহঁতৰ শাৰীৰিক গঠনবিলাক ৰঙীন হৈ আহিবলৈ ধৰিলে জেছা ইল্লিছে তিতলিকি বান্না যেনেদৰে পলুৰ পৰা পখিলা হয় যেনেদৰে পলু এটা পলু কি কয়
পলুৰ পৰা পখিলা এটা ৰঙীন পখিলাৰ উৎপন্ন হয় ঠিক সেইদৰে সিহঁতো তেনেকৈ ডাঙৰ হৈ ৰঙীন হৈ যাবলৈ ধৰিলে मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाव ड्यूटी झलकने लगी लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया उसका गर्दन ऊंची कर देखना विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना पानी पीना टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है गति का चित्र नहीं आंका जा सकता যে মৌৰা চৰাইটোৰ মূৰৰ ওপৰত থকা কি কয় টুপি মানে ফুলৰ দৰে টুপিটো আৰু চুলিবিলাক কি হৈ গৈছে ডাঠ হৈ গৈছে ওখ হৈ গৈছে আৰু একদম জিলিকি পৰিছে ধুনীয়া হৈ পৰিছে चोंच अधिक बंकिम और पेनी हो गई और ठूँटটো चोंच माने ठूँटটো बहुत बेका हो गई और खूब तीक्ष्ण हो परिছে पेनी माने धार थका खूब चुका हो गई गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाव ड्यूटी झलकने लगी और गोल गोल चकु केइटात नीलमणिर कि कय जिलिकनी देखिবলৈ পোৱা গৈছে नीलमणिर दरे जिलिकी परिছে लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी जे दीघल नीला सेउजिया डिঙিৰ বিভিন্ন ভংগিমাত এনেকুৱা লাগিছিল যেন ধূপ চাহি तरंगे उठने गिरने लगी माने धूप माने रोड और छाही माने छा कथा कैसे जे रोड और छाहर तरंग माने ढौ उठा नमा কৰিবলৈ ধৰিলে दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे दक्षिण वाम माने কৈছে যে দুইটা বিপৰীত পাখিতে কি হৈছে सलेटी माने সোণালী ৰং আৰু सफ़ेद माने বগা ৰঙৰ आलेखन माने चित्र बगा रंगर छवि बा चित्र स्पष्ट हो परिবলৈ ধৰিলে पूँछ लंबी हुई और नेजडाल दीघल हबले धरिले नेज माने कि कय नेजर पाखिबुर दीघल हबले धरिले और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे और कि कय नेजत थका पाखिबिलाकत एनेকুৱা লাগিছিল যেন रामधेनुर हातुटा रंगे तात जिलिकी उठिसे रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से उसे रंजित कर दिया और रंग रहित पैर माने तार भरिकेटात किन्तु एको रंग नाई माने एकेबारे रंग रहित रंग नाइकिया और हे रंग नाइकिया भरिकेटात किन्तु एटा गर्वीली गति माने एकदम एटा गहीन गम्भीर गतिरे एटा नतुन गरिमा प्रदान करिसे उसका गर्दन ऊँची कर देखना और ही डिंगीटो ऊपरলৈ কৰি চোৱা विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना और एटा विशेष भंगिमारे हे डिंगीटो तलলৈ কৰি दाना खुआ पानी पीना पानी खुआ टेढ़ी कर शब्द सुनना और डिंगीटो बेका কৰি किबा किबि शब्द शुना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था आदि कामসমূहत जी कोमलता सुकुमारता माने कोमलता और सौंदर्य था और जी सौंदर्य आसिल उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है तार अनुभव देखिलेहे কৰিব পৰা যায় गति का चित्र नहीं आँका जा सकता और সেই গতিটোৰ চিত্ৰ কিন্তু আঁকিব পৰা নাযায় গতিকে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত মানে সেকেন্ড পাৰ্টটোত ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু পিছৰখিনি আকৌ মই থাৰ্ড পাৰ্টৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক বুজাই দিম দেই থ্যাংক ইউ